Hello and welcome back to my channel. So if you have not subscribed to my channel yet, please do so. Do not forget to subscribe and hit the bell notification so that you can keep getting notified for the new videos that are coming up. Okay, now talking about today's video. So I've been sharing a lot of recipes of late because due to lockdown and everything, a lot of people have been cooking at home. Like everybody has been cooking at home, but a lot of people have been trying new dishes at home. So that's the reason I've been sharing a lot of recipes. But today I've got something different. It's a recipe, but it's for your skin. So it's again made with some ingredient that you will have in your kitchen itself, and it's a beauty hack. So I have been a purchaser of lip and cheek stains or tints. So there are a lot of brands, a lot of international brands which sell these, and ये अलग-अलग colors के होते हैं, very bright pink और bright red. So उससे क्या होता है ना, बहुत ही pigmented होता है. इतनी छोटी सी बॉटल आती है उसकी 1000 रुपीज़ की, and you just put it on your lips. तो lips पे natural सा color रहता है, like you know natural pink दिखेगा. It will not be pink like a lipstick, खाली नेचुरल हल्का सा पिंक टच आता है उसके लिए. सो वो मलबेरीज, रास्पबेरीज और बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स से एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहता है, एंड दोज आर ऑल्सो मेड विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. बट वो कम से कम 1000 रुपीज़ में मिलते हैं. एट द सेम टाइम वो सेम चीज़ आप अपने चीक्स पे लगा सकते हो टू गेट अ नेचुरल ब्लश. एंड वो ब्लश के लिए भी लाइक सो इट्स यूज्ड फॉर बोथ द थिंग्स. एंड वो इतनी छोटी सी बॉटल ना, इट लास्ट्स फॉर अराउंड लाइक यू नो कपल ऑफ मंथ्स, लाइक 2 months काइंड ऑफ टाइम. अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो तो 1 या 2 महीना प्रॉपरली चलेगा, बिकॉज बहुत ही थोड़ा लेना होता है. सो आई हैव मेड दैट थिंग एट होम यूजिंग बीटरूट, बिकॉज बीटरूट इज़ वेरी हाईली पिगमेंटेड. तो उसका जो कलर होता है वो बहुत ही वाइब्रेंट होता है. अगर गलती से भी किसी सब्ज़ी में इतना सा भी गिर जाता है ना, पूरा का पूरा सब्ज़ी पिंक हो जाता है. सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई, एंड अपेरेंटली आई फाउंड लॉट ऑफ पीपल यूजिंग दिस ऑन गूगल. So I just used one of the easiest ones to make my own tint, and बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है. सिर्फ 2 ingredients का रेसिपी है. You will only and only need coconut oil and beetroot. आगे का रेसिपी आप खुद चेकआउट कर लो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट टिल द एंड. लास्ट में मैंने उसको अप्लाई करके भी दिखाया है. यू विल एक्चुअली बी एबल टू नोटिस द डिफरेंस वंस दैट टिंट इज़ अप्लाइड. एंड अगर आप बाहर से टिंट खरीदते हो तो वो टिंट भी थोड़े लाइक यू नो इट विल स्टे फॉर अ लिटिल टाइम. आप खाना वाना खाते हो एंड स्टफ तो वो नेचुरली वेयर ऑफ हो जाता है बिकॉज इट्स नेचुरल. सिमिलरली आप ये बीटरूट से टिंट बनाओगे, उसका भी सेम इफेक्ट रहेगा. इट विल स्टे फॉर सम टाइम. आपको रीअप्लाई करते रहना है. बट द बेस्ट पार्ट इज़ बिकॉज ऑफ कोकोनट ऑयल, it's going to keep your lips very moisturized, and beetroot will give a natural color. It has antioxidant properties and stuff, so it's actually supposed to be very good for your skin, for your lips and everything. So check it out, and let me know in the comments how you liked it. In case if you try it, please do leave a comment behind, and also you can mention what are the other kind of videos you would like to see from me. I am going to be sharing a lot of DIYs in near future, so do stay tuned for those as well.